Anjivita, good morning, and today I need to explain how to prepare IAS Maths optional for 2019 to 20. दिस इज मतलब मैथ्स ऑप्शनल प्रिपरेशन कैसा करना इसी साल का. एनीवे यू पीपल आर गोइंग टू राइट प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर, नॉट 2019 June, and you are going to write on 2020 maybe probably June first week or May last week, whatever the schedule. According to that you people are going to write. Therefore, the best thing what you have done, people have chosen the maths optional. Already you have decided, sir, this maths optional will give you fetch the good marks for us. And you have among the lot of optionals in UPSC. Literature side you have, and science background you have, arts background you have, many. This is the optional, that's it, in the name itself only. Not compulsory, optional. There is no restriction at all. The only thing, your interest, your area of background, these are the factors, and availability of the coaching and study material, these are the things. That is the only selection of that. Right now I am not indulging how to choose the optional. ये जरूरत नहीं हमको, already हम choose किया. We are in the next level. Right now how to कैसा करेंगे ये preparation? I tell you. See, optional, since I am always advising, since IAS 2013 onwards, we can score 300 plus. That time, people used to score very less. Even other optionals also somewhere 220, 230, 240. But mathematics optional used to score 275, 280, 290. And I put the target for 300 plus. And people achieved that. And next year, nothing but next, we have increased that not only 30 marks. Yes, people have breaked that result. And next year, we have put it as a 350 plus. Again, people are breaking. Right now, we are going to discuss how to cross the 400 plus optional for this year. 400 plus. See, getting the marks out of 500, whatever the marks, this is our hard work. This is not your hard work, it is not my hard work, it is our hard work. That's it. This is our hard work. Hard work with strategy. With analysis. This is. And I can give you that not only you people, each and everybody, whether they are in the regular classroom students, and whether it is a weekend classroom students, or whether it is online maths optional students, or maybe pen drive maths optional students. I am giving the only. Whatever I am putting the energy, each and everything is the same. Then the thing you have to spend that, your hard work. Because of there is no discrimination giving the lecture for me. I will give the each and everything. What are the necessary things? Why? Because the roadmap for us is IAS 1992 to 2018 previous year questions only. 2018 previous year questions. That's it. That data we have. Not only, everybody have, suppose. Now, based on, we have that, आपको बताता हूं पहले, ये प्रिपरेशन के पहले, कैसा ईच एंड एवरी ऑप्शनल, कैसा पेपर होगा. हमको मिलेगा बेटा पेपर 1 एंड ऑप्शनल में पेपर 1 एंड पेपर 2. Every optional has 2 papers, paper 1 and paper 2. Each paper carries 250 marks out of 400. That's it. This is the maximum marks. They will give the 400 marks, but we won't get. Maximum marks is 250. That's it. We won't get beyond the 250. Nobody else. There is no maximum 250. They will give the assign the paper for
for 400. Same for here is also 250 maximum marks out of 400. That's it. We can get. Okay. Now here see, we have question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, and next this entire is I'm calling as a section A. Section A. And question number 5, question number 6, question number 7, question number 8. This entire is the section B. Section B. In the paper 1, we have in that same story. Here is also question number 1, 2, 3, 4. This come under the section A. Section A. And question number 5, 6, 7, 8. Again, this is come under the section B. Section B. Each and every optional paper, whether it is a Hindi literature, whether it is a maths optional, whether it is a physics optional, whether whatever that Punjabi literature, whatever the optional, the same structure. Same structure. We have actually in our maths optional 13 chapters, we have 13 modules. I am calling as 13 modules. In that paper 1, we have the linear algebra and calculus and analytical geometry. Paper 1 section A, that's it. And paper 1 section B, we have ordinary differential equation, vector analysis, and dynamic and statics. That's it. Dynamics and statics. That's it. These are the 3 chapters. And we have the paper 2. Here we have modern algebra and real analysis and complex analysis and linear programming. That's it. These are the 4 topics here. And we have section B, paper 2 section B, we have partial differential equation and numerical analysis and computer programming and mechanics and fluid dynamics, MFD. That's it. Therefore, see, clearly they are asking these 4 questions from these 3 topics. These 4 questions from these 3 topics. Therefore, these 4 questions from these 4 topics, these 4 questions from these 3 topics. That's it. They won't ask you the any PDE question here, or they won't ask you the any complex analysis question here. There is a everything. And see, I tell you, in that question number 1 is the mixed question. Each question carries 50 marks, beta. Each question carries the 50 marks. Here is also 50, 50, 50, 50. 50, 50, 50, 50 marks. Therefore, total 8 into 50, 400. Same thing, each question carries the 50 marks. Okay, right, total 8 into 50, 400. But we won't get. In UPSC, nothing but each optional paper, they are demanding from you, attempt 5 questions. Attempt 5 questions. Only 5 questions मुझे को चाहिए बस. Out of 8 questions, हमको चाहिए 5 questions. 5 questions only. In somewhere in 90s, I can say that somewhere 1980s paper, you can observe that 1975 IAS, 1980, those time they used to give the serial number 1 to serial number 35, 1 to 35, you can pick up any 5 questions. That time, people few topics, they got the very good marks. But right now, present scenario, how they are mixing, I tell you. Question number 1, they are expecting from you, I tell you, the compulsory questions are question number 1 and question number 5. You have to attempt question number 1 and question number 5. You have to attempt, that's it. In case if you are unable to attempt this question, income means we are losing the marks. सर मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ के क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ के 2, 3, 4 कर दिया, सारा सही है, मुझे को पता है आंसर मैच हो रहा है, एंड 6, 7, 8 कर दिया मैंने. टोटल कितना 6 क्वेश्चंस विद इन द टाइम मैंने सबमिट कर दिया. दे ये ऑल आर राइट, आई नो दैट, ऑल आर राइट. दे वोंट काउंट एज ए वो 6 कर दिया, हमको 5 चाहिए, देयरफॉर ओके 5 into 50, 250 नहीं है. They can count 3 questions, but that's it.
Why? Because so these are the compulsory questions. Question number 1 and question number 5. Why they are compulsory? Question number 1, always they are mixing linear algebra, calculus and analytical geometry for 10 marks. Here they are asking question number 1 as a simply here A, B, C, D, E. That's it. And depends upon the choice. Here each question carries the 10 marks. 10, 10, 10, 10. Sometimes they are mixing A में question number 1 5 marks, question number 2 5 marks, or 6 marks 4 marks, 7 marks 8 marks. They have done. Even 8 marks 2 marks. In that they are balancing the question. अभी तक हमको 1 मार्क वाला क्वेश्चन अभी तक पूछा भी नहीं. अभी तक 1 मार्क वाला क्वेश्चन तो पूछा भी नहीं. 2 मार्क 3 मार्क they are managing. Nothing but A, question number A, nothing but 1A, 10 marks. No? In that sometimes, maybe if it is a linear algebra, find the rank for 7 marks. Suppose linear algebra. Or something, find the area for something else. Okay, 3 marks. Or find the dimension. That's it. 7 plus 3, or 6 plus 4, or 5 plus 5. This depends upon the question only. Okay, same here is also. This is the compulsory. Here is also question number 5, ODE and vector analysis and dynamic statistics. Here is also question number 5 is partial differential equation and numerical analysis and mechanics and fluid dynamics. Here question number 1, modern algebra, real analysis, complex analysis and LPP. That is mixing. Now how they are following the pattern? Here 20-20-10, that game they are playing. कोई भी 220 को दे रहा है, इधर कभी भी आप 2013 टू 2018 एनालिसिस कर लीजिए, 2018 एनालिसिस कर लीजिए, इधर 20-20-10 और 20-20-10 और 20-20-10 ऐसा बैलेंस कर रहा है. इधर सेम दे मोस्ट ऑफ द पेपर्स 20-20-10, but the trend is also changed. Even vector analysis also they have asked the 20, sometimes 30 also. They are managing. Okay, 30, if it is a 10 and 10, that balance they are making. If you observe that, I tell you, in the same way, here is also the game is playing. Here is also. Okay, these are the compulsory. And they are demanding from you, you have to, suppose मैंने question number 1 5 कर दिया. Suppose Ramanasri Sir has attempted question number 1 and 5 and suppose 2 3 4 मैंने कर दिया, 2 3 4 कर दिया, मैंने 5 क्वेश्चंस कर दिया. क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 5 भी अटेम्प्ट किया, 2 3 4 कर दिया, मैंने टच नहीं किया. Then still they won't count as a 5 questions, only they can count as a 4. Why? Because they are asking you for at least 1 question इसी में कर दो, 2 3 4 में at least 1 question कर दो, इसी में भी at least 1 question. See, question number 1 and 5, these are the fixed. You have to attempt. उसके बाद आपको चॉइस दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 में एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर दो, अटेम्प्ट कर दो. इधर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, ये 1 क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन हो रहा है. नाउ यू हैव ए चॉइस फॉर विच क्वेश्चन? 5th क्वेश्चन यू हैव ए चॉइस. फर्स्ट में नो चॉइस एट ऑल. क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 हल्का सा थोड़ा सा फ्रीडम दे रहा है, भाई आप 2 3 4 में कोई भी आप चूज कर लो. ओके ना, इधर 5 6 7 में कोई भी चूज कर लो, दैट इज अप टू यू. उसके बाद 5th क्वेश्चन तुम्हारा मर्जी, दैट इज अप टू यू. यू कैन चूज अमॉन्ग दीज 3 और अमॉन्ग दीज 3, दैट इज अप टू यू, डिपेंड्स अपॉन द टाइम. दैट इज द 5 क्वेश्चंस अटेम्प्टेड. ओके, राइट. In our maths optional, don't worry, they are giving the full marks if the question is right, proper steps, proper diagrams, necessary things, then definitely they are giving that, full marks only. Therefore, no need to worry about they are giving the, reducing the marks and all. No need to worry about it. They are giving the full marks only. If the answer is matching, proper steps, it is not about the answer matching. Our game is not about the answer matching. Sir, question, answer is matching, give me the 10 marks. Nobody will give you. Proper steps. Okay, na? Proper steps. Proper diagrams. Whatever the necessary formulas are there, each and everything you have to present it.
Clear? Are you understanding? Then only you will get the full marks. Now come to that. In 2013, what they have asked, they haven't jumbled at all. Nothing but question number 1 mix कर दिया, क्वेश्चन नंबर 5 उसके बाद सीधा डायरेक्टली एंटायर क्वेश्चन नंबर 2 फॉर लीनियर अलजेब्रा, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर कैलकुलस, क्वेश्चन नंबर 4 एनालिटिकल ज्योमेट्री. That's it. 2013 here directly question number 6 ODE and question number 7 D and S, question number 8 vector analysis. It's the same thing here is also. Then there is no mixing at all. Always only the question number 3 here is also LPP and complex analysis, and here real analysis, modern algebra, and here real analysis. That's it. Here is also see the 2014 what they have done. They haven't touched here, but they have mixed here. 2 PDE questions here and 2 MFD questions here and numeric analysis. 2 mix कर रहे हैं इधर. Then the paper, the same topics, they are increasing the level of difficulty. In 2000 IAS topper, whoever got the optional maybe 300, उनको इतना maths तो है ही नहीं, but he is the topper of the maths. केवल 7 topics only they got through, they have settled in their life. Okay, right? And after that they have mixed. People are preparing you have to prepare total 13 chapters. I tell you, what are the easy modules? Easy modules we have, even 10th class modules. I can put it as a basic maths. 10th class, somebody has done 10 to 12. That's it. Even 10th class is sufficient. Beyond that, not required. 10 to 12. He can understand vector analysis. He can also solve the IAS questions. Complex analysis, linear programming, and numeric analysis and computer programming. इनको बड़ा मैथ्स आने की जरूरत नहीं. And whatever the year you can take, minimum you can get the 200 plus marks. All the papers. And no section. See, here only दोनों एक ही section है. इनको mix आ रहा है, नहीं आ रहा है. But ये अलग section है, ये अलग section. This is paper 1 section B. This is paper 2 section A. This is paper 2 section B. Topic. They are not mixing. Don't worry. Sir, इधर numeric analysis पूछ रहे हैं? नहीं, they are not asking. हमेशा इधर पूछ रहे. इतना clarity UPSC दे रहा है आपको. Clarity they are giving. Don't need to worry about it. समझ रहे ना? Okay, they are giving the clarity. Okay, right. Now ऐसा दे रहे मतलब समझ रहे ना? These are the 10 to 12 class student can able to attempt. I can make you. I am assuring 100%. I am giving the surety. That's it. If you know how to operate calculator, these are all the formula based only. LPP, this is something very easy. Additions and subtraction and multiplication. That's it. There is no division also at all. You need to know the process. That's it. And here linear programming, you people have studied operational research. इतना जरूरत नहीं है. Only simplex method, graphical method, duality, transportation problem, assignment problem. That's it. Our LPP is over. There is no traveling salesman problem. There is no game theory. Anything. That nothing else. We have only cable. And vector analysis, a complex analysis also. Cauchy residue theorem, analytical functions, Cauchy residue theorem, and Cauchy integration, how to do the contour integration. These are the things only. That's it. Okay, in that vector analysis, we need to know that how to do the vector differentiation and integration and 3 famous theorems, Stokes theorem, Green's theorem, Gauss theorems, and Inca applications. That's it. Serret-Ferrand formula and application to the geometry. That's it. Therefore, minimum less hard work. I can say that 1 month hard work, we can score the 200 marks. Okay, na? Are you understanding? Right. Next, one more layer topics. One more. Thoda sa formula oriented. Some people would you remember formulas? Sir, I know the integration formulas, differentiation formulas, trigonometry formulas, basic algebra problems, fundamentals of algebra, little bit. These are the things, and factorizing. All the 10th class knowledge, plus you have to remember the formula. That's it.
If Ramanasri Sir is not unable to remember any formula, means he cannot able to manage easy modules. इसी में अंडरस्टैंडिंग का बड़ा बात नहीं है, सबको भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा. If you are daily, if you are degree first year student also, or BTech first year student also, you can understand. It is not a problem. The game here हमको प्ले करने के लिए हमको थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए. Like integration 1/1 upon x square plus a square dx. If I don't know this formula, I cannot able to lot of problems related to this. I cannot able to. वहां तक करके छोड़ना पड़ता है. छोड़ने के हमको we can lose the marks only. समझ गए ना? If we don't suppose integration of cos x or differentiation of something or sin a plus b formula or cos a plus b something. ओके ना? हमको we can stop it. आधा करके छोड़ना पड़ता है. समझ रहे ना? इधर फॉर्मूला बेस्ड ओनली. इनको शॉर्ट नोट्स भी हेल्प करेगा आपको. ओके ना? यू हैव टू यूटिलाइज द शॉर्ट नोट. इधर भी थोड़ा सा प्रोसेस भी शॉर्ट नोट्स. इधर न्यूमेरिकल एनालिसिस में ज्यादा फॉर्मूलास नहीं है, केवल 14 फॉर्मूलास ओनली. हर साइंटिस्ट का नाम है, हर फॉर्मूला. सपोज सिम्पसन 1/3 रूल, उनको फॉर्मूला. सिम्पसन 3/8 रूल, उनको फॉर्मूला. वो इजी, वी कैन 2-3 टाइम्स बैठ करने से उसके बाद प्रोसेस बता होता है तो हो जाएगा. इधर भी केवल एलपीपी, इधर नो फॉर्मुला एट ऑल, ओनली प्रोसेस. वो सिंप्लेक्स मेथड मींस हम ये करना, ये प्रॉब्लम होता है तो ये करना बस. इसको कोई फॉर्मूला जरूरत नहीं. टेबल कैसा ड्रॉ करना, बेसिक वेरिएबल क्या है, मैक्सिमम कौन सा लेना क्या है, व्हेन द वेक्टर इज गोइंग, इनकमिंग वेक्टर क्या है, आउटगोइंग वेक्टर क्या है, व्हाट इज द रेशियो, दीज आर द थिंग्स ओनली. टू अगेन एंड अगेन वी नीड टू डू द प्रोसेस. एक ही चीज है, बार बार करना पड़ता है. एक बार ऑल द डेल्टा जे लेस देन 0 आपको स्टॉप कर लेता, अदरवाइज जरूरत नहीं. I tell you in the problem. Same thing duality, same thing LP. Complex analysis. The name is in the complex analysis, but it is not a complex. Simple only. The syllabus is very little bit in our IAS maths. Therefore, we can handle the questions. Okay, now come to that here formula oriented topics. Ordinary differential equations. Okay, either you can score the 70 to 90 and the partial differential equation. You can score 50 to 70. And one more topic, analytical geometry. Here is also formulas. 50 to 70 marks. That's it. These are the formula oriented topics. इधर समझना में कोई भी बड़ा मैथमेटिक्स जरूरत नहीं. ये तीनों मिला के विथ चॉइस. इधर यू कैन स्कोर मिनिमम कितना, 190. सपोज मान के चलो आई एम रिड्यूसिंग द फर्दर 150 to 200. ओके, एंड सर जी ये थोड़ा सा चॉइस भी चला जाएगा. इधर तो नो चॉइस एट ऑल, अलग अलग सेक्शन था. बट ये टॉपिक ऐड करने में मे बी समटाइम्स इफ दे आर मिक्सिंग, बट मिनिमम वी कैन स्कोर हाउ मेनी मार्क्स, 200 प्लस 150, 350. बट लीस्ट वर्स्ट केस आई एम टॉकिंग अबाउट 300 प्लस वी कैन स्कोर. हमको ये सफिशिएंट नहीं था, ये नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट. ये टॉपिक्स कमेंट करने से हमको 300, ये ऑप्शनल है. बाकी लोग है ना, यहां से रीच करने के बहुत साल वेस्ट करना पड़ता है. 300 स्कोर करने में रेस्ट ऑफ द ऑप्शनल है बहुत टाइम टेकिंग. दे आर टेकिंग टू मच टाइम, दे हैव टू टेक. बट उनको क्या होता है, सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा. क्यों? क्योंकि लिंक नहीं होता. समझ रहे ना? हमारा सिलेबस कौन सा, सिलेबस ओनली द सिलेबस इज ऑल्सो स्मॉल. फॉर आवर्स इज नॉट ए सिलेबस इज लेंथी. ये नहीं था, सिलेबस इज तो स्मॉल ओनली. बट लिंक तब तक पीडीई नहीं होता है तो ओडीई नहीं होता, तब तक ओडीई नहीं होता तो पीडीई. इंटरलिंक. सपोज मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, एक ही तरीका चाहता है. And real analysis, that is a different story. And dynamic statics, that is a different strategy. Mechanics and fluid dynamics, we need to follow the different strategy. Variety strategies हम follow करना पड़ता है. ये चीज. Okay, right. And थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग. इधर टीचर्स में कोई भी रोल नहीं होता. There is no teacher in all over India, in the abroad, whatever the world also. I can very good at the ODE. हमको मजा नहीं आता. सर इज टीचिंग वेरी गुड एट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस.
ट्रेमेंडस, मजा नहीं आएगा। मजा आने वाला टीचर कैपेबिलिटी आपको 4 टॉपिक्स हैं, ओके ना, 4 टॉपिक्स ओनली। ये टॉपिक्स है ना, थोड़ा सा स्टडी मटेरियल कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये टॉपिक्स भी मोर और लेस कुछ वीडियोस वगैरह ये मैनेज कर लेते हैं हम, ये वीक तो है नहीं, क्योंकि फॉर्मुला ओरिएंटेड ओनली, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करना। एंड द बेस्ट थिंग, द ब्यूटी इन अवर ऑप्शनल, इवन रेस्ट ऑफ द ऑप्शनल में इतना नहीं था, अवर ऑप्शनल में डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक्स ओनली। ये नहीं था दैट टू व्हाट सॉलिड एग्जांपल्स में दे रहे, दैट इज वन मोर रीजन। रेयरेस्ट रेयर केसेस एक्सरसाइज में दे रहे, एक्चुअली जरूरत नहीं एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि सेम नंबर्स ओनली चेंजिंग, समझ रहे ना, ओनली सॉलिड एग्जांपल में दे रहा है। इसी में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स कौन सा, ये टीचर्स में डिपेंडिंग हो। मॉडर्न अलजेब्रा इधर एक टॉपिक, एंड रियल एनालिसिस एंड वन मोर मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स and dynamic and statistics. That's it. These are the 4 topics. I am writing modern algebra, real analysis, and dynamic and statistics, and mechanics and fluid dynamics. Here thoda sa hard work karne se, here they can want, if they want to increase the difficulty, they can increase. If they want to reduce the difficulty, they can decrease. That is a game. Empire, third empire is nothing but UPSC people only. Here they won't make you to the complex. Not possible at all for them or for anybody. Here also not possible at all. The only the thing, if you are doing the very practice, very highly, if you are doing the practice, they cannot make you to the complex difficulty. It is not possible at all. They have to give the syllabus within the syllabus. If they are giving the concepts out of the syllabus, means simply you can put it as out of syllabus. They have. But here they can ask you the difficulty if they want. If they want to make you to the easy, yes, they can. And calculus is also same, more or less formula oriented only, but thoda sa process समझना पड़ेगा. And linear algebra, due to the matrices is there, half of the 35 marks for matrices, 35 marks for vector algebra, vectors part only. What is a vector, what is a सबस्पेसेस, स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस क्या है, सब स्पेस क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट क्या है, बेसिस क्या है, डायमेंशन क्या है, नलिटी क्या है, रोटी क्या है, वो चीज समझना पड़ेगा थोड़ा सा. एंड उसके बाद मैट्रिसेस वेरी डेड इजी फॉर यू पीपल, वेदर यू पीपल आर बीटेक और बीएससी, दोनों का इजी है क्योंकि मैट्रिसेस था उधर. Simple rank of the matrix, Cayley-Hamilton theorem, how to find the A power 20, A power 10 or A power 100, or how to find the A inverse, and eigenvalues, eigenvectors, and what is the Hermitian matrix, what is the skew Hermitian matrix, what is the orthogonal matrix, what is the unitary matrix, what is the symmetry and skew symmetry based on the eigenvalues and eigenvectors. That's it, how to find the rank, equivalent form. These are the things only here. Therefore, linear algebra, it is not a tough part. Easy only. You can put it as here, calculus and linear algebra also, more or less. You can cross 300 to 350, you can add. प्लस आप स्कोर कर लेंगे, बट चॉइस में ना 300 को आ जाएगा बस, क्योंकि इंटरनल चॉइस वो दिस. द ओनली मेन अंडरस्टैंडिंग कौन सा, यही है चैप्टर्स. रियल एनालिसिस थोड़ा सा ट्रिकी, यस व्हाई नॉट, थोड़ा सा ट्रिकी एंड लेंथी. एंड मॉडर्न अलजेब्रा, यस वेरी वेरी ट्रिकी, बट आई कैन मेक यू टू इजी, डोंट वरी. मॉडर्न अलजेब्रा, why? Because initially, क्योंकि ना this is the modern algebra, recent trend only. आपको पता है normal algebra, but modern algebra recently they have developed. What is the thing groups, what is the ring theory, what is the group theory, what is the field, what is the integral domain, what is the principal ideal domain, everything we will discuss step by step only here. And dynamic and statistics and mechanics and fluid, these are physics related chapters. And the applications of here only, the former dynamic statics and mechanics, and this is also not lengthy and थोड़ा सा tricky, थोड़ा सा हल्का सा. एक टेक्निक आपको पता होता है तो बस we can expect it also. People use it to score these chapters, what 11 chapters अच्छे से प्रिपेयर करके, ये दोनों चैप्टर्स है ना 10 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू को प्रिपरेशन करता था उसी टाइम पे. बट आजकल ट्रेंड में यू हैव टू प्रिपेयर होल 13 chapters. You can make it in mind. You have to prepare. And that is up to you. In order to score 400 plus, my strategy here 400 plus out of 500.
वी हैव टू रीड 13 मॉड्यूल्स बेटा, किसी मॉड्यूल को कम नहीं था, ज्यादा नहीं था। पहले था डिफरेंट डिफरेंट ओनली, बट आजकल ट्रेंड में 2019 to 20 in order to score 400 plus you have to command the all the 13 chapters। उसी में ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। ओके, द हार्डवर्क इसी में ज्यादा, बट एक बार समझ में आ रहा है ना, दैट्स इट, आपको रिड्यूस हो जाएगा। इसी में आपको ज्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। इधर रिवीजन जरूरत नहीं, ज्यादा रिवीजन जरूरत नहीं, बस चीज समझने में टाइम टेकेंगे, चीज समझने में टाइम टेकेंगे। उसके बाद रिवीजन डेड दीजिए, आपको भी बोरिंग लगता है रिवीजन में, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। द बेसिक थिंग्स ओनली हियर, द ब्यूटी इन दिस, आई लव दिस 4 chapters, क्योंकि समझने में तो मुश्किल था। यस, आई एग्री, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, ना टीचर को भी ना स्टूडेंट्स को भी। देर आर द फेल्यूर टीचर्स ऑल्सो देर टू एक्सप्लेन इन द मार्केट। I have seen so many teachers, they haven't explained, or they're, asking to come for modern algebra, this kind of teacher, real analysis, this kind of teacher, X, Y, Z, and we can manage these two, the variety. Yes, this is also challenging task for teacher and students also. Challenging task for students also to make them to understand. The final journey, we have to crack the previous year questions. That's it. That is, if you are able to crack, हाँ सर ये समझ लिया, सर ये हमको एक्सप्लेन कर रहा है, हम ये समझ लिया, चलो एक बार सॉल्व कर देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपना आप से। आपको धीरे धीरे ना पहुंच जाओगे, समझ रहे ना? राइट, दिस मॉड्यूल्स कौन सा, इतना बात नहीं है, बट ज्यादा रिवीजन चाहिए, ज्यादा रिवीजन। आपको फार्मूला भूल गया, इफ यू फॉरगॉट द फार्मूला, दैट्स इट, यू हैव इन द मिडिल ओनली। ये प्रॉब्लम कौन सा चैप्टर में आ रहा है वो भी भूल गए हैं, स्ट्रक्चर, दैट्स इट, यू आर आउट ऑफ द स्ट्रीम ऑन। समझ गए ना? ये आपको मिसलीड कर लेते हैं, टीचर को कुछ फर्क नहीं होता, टीचर आराम से विदाउट प्रिपरेशन ऑल्सो, हाँ पीडीई और ओडीई, हाँ ओडीई फर्स्ट पहले हम समझाना पड़ेगा बच्चों को फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसा फॉर्म हो रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण समीकरण कैसा, उसके बाद आर्डर क्या है, डिग्री क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री क्या है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी क्या है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट अ फर्स्ट डिग्री क्या है, उसके बाद सिंगुलर सॉल्यूशंस क्या है, सबसे आफ्टर दैट फर्स्ट ऑर्डर linear differential equation, I can say that, and second order and higher order and linear differential equation, complementary functions क्या है, particular integral क्या है, दोनों मिला के जनरल सॉल्यूशन क्या है, धीरे धीरे ना। उसके बाद मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर्स, उसके बाद सेकंड ऑर्डर वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, उसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स इट, लैप्लास दैट इज सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स ऑन कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, दैट्स इट, दैट इज द ओडी, एंड पीडी इज आल्सो more or less same structure, and analytical geometry same, from the plane to last conicoids and paraboloid, same thing, plane क्या है, straight lines क्या है, sphere क्या है, cone क्या है, cylinder क्या है, ये चीज समझना पड़ेगा। conicoid क्या है, conicoids में what is the central conicoids, what is the non central conicoid, how many, उनको paraboloids क्यों कर, उसके बाद जनरेटिंग लिंक्स, दैट्स इट, दैट इज द एनालिटिकल ज्योमेट्री। उनको थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, दैट्स इट, अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट, द स्ट्रक्चर इज सेम, tangent plane wherever you can take, s1 is equals to 0, that is our formula। Therefore here the whatever I am giving the formulas for this, you can here formulas won't help, हल्का फुल्का सा इधर formulas only, but इतना जरूरत ना मैनेज कर लेता, क्योंकि लेस formulas, क्योंकि ना हर चैप्टर में वेरी 5 to 10 formulas are there, then it won't take much effort for you। इवन रियल एनालिसिस, मॉडर्न, इधर मॉडर्न अलजेब्रा में फार्मूला तो है ही नहीं, कौन सा फार्मूला है, कोई भी फार्मूला तो है नहीं टू अंडरस्टैंड रियल एनालिसिस। यस, 2-3 formulas are there, I agree, few formulas, 2-3 means few formulas are there, I agree, but I won't treat it as that is a formula, क्योंकि ना आपको करने में याद हो जाता है। The only the thing here, the formula will come. Here is also, I won't treat it as this is the formula we are unable to recall. LPP में कोई भी formula है नहीं, there is no single formula, I need to remember. The only the thing process, complex analysis, yes, there are the few formulas, but not too much, hardly 10 to 12, and vector analysis, same thing, and numerical analysis computer, that is also I told you,
दैट इज द सिलेबस। इसीलिए इनको आपको 400 मार्क्स लाने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द 4 चैप्टर। इसी में आपको बता रहा हूं 50% योर टाइम एंड माई टाइम एनर्जी आपको स्पेंड करना पड़ेगा, ज्यादा इसमें स्पेंड करना पड़ेगा। एंड इसी में मेरा टाइम 30%, आपका टाइम 80% आप स्पेंड करना पड़ेगा। आप मेरा टाइम 30, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन द सिलेबस। आपको प्रैक्टिस ज्यादा होना चाहिए, इधर प्रैक्टिस नहीं है। मेरा काम ऑलमोस्ट ऑल आई कैन से दैट 80 to 20 मेरा वर्क है 80, आपका वर्क 20। आपका वर्क 20 कौन सा? सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मेरा काम क्या? आई नीड टू गिव द बेसिक थिंग्स। उधर उधर 4-5 बुक्स में जोड़ के आपको बेसिक देता रह दूंगा। आप है ना अटैक अंडरस्टैंड कर लो। सर जी डाउट्स वगैरह होते तो कॉन्सेप्ट में पूछ लो, समझ गए? एक बार कॉन्सेप्ट माइंड में चला गया, डोंट वरी, यू नेवर फॉरगॉट द कॉन्सेप्ट्स ओनली। आई टेल यू ऑल द ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर, आई विल टच ईच एंड एवरीथिंग हियर। ओके ना, दैट्स इट। मेरा 80%, इवन ज्यादा भी ले सकता हूं, क्योंकि समझना में टाइम है। यस आई नो दैट दिस इज द वेरी डिमांडिंग हार्ड वर्क। आप इसी में इतना हार्ड वर्क कर दो, पहले कुछ भी नहीं आता, ऑलमोस्ट ऑल 0 ओनली। बट टीचर्स को ज्यादा रोल होना चाहिए। एंड टू आफ्टर दैट 20%। ईयर कौन सा? मेरा वर्क केवल रिवर्स ओनली 30 to 40%। मेरा सपोज मान के चले 30 to 40% मेरा वर्क। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो। आप है ना 70 to 60% थोड़ा सा रिवीजन हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इधर मेरा वर्क है ना ऑलमोस्ट ऑल you can make it as a, I can say the 10% of work only mera. I won't say the 0, 10%, 10, 20, that's it. I won't increase even 20 also, 10 to 20. सिलेबस में क्या है एक बार समझना पड़ेगा। उसके बाद आप 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने से प्रीवियस क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। Therefore इधर तो ज्यादा बात नहीं है, आप 90 to 80% आप कर सकते हो। एंड इट विल टेक ओनली 1 month, that's it, only 1 month, 30 days में फटाफट हो जाएगा। वेरी स्लो टीचिंग, नॉट इवन फास्ट। इवन वेक्टर एनालिसिस, इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम टू डिस्कस ऑफ 15 क्लासेस, ओनली 7 क्लासेस। ईयर इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 7 क्लासेस, एलपीपी ऑल्सो 7 to 8 क्लासेस, न्यूमेरिकल एनालिसिस कंप्यूटर प्रोग्राम इज ऑल्सो 7 to 8 क्लास। दैट्स इट, फास्टली हो जाएगा। बट हियर यस थोड़ा सा लेंथी एंड हर चीज थोड़ा सा समझना पड़ता है। एंड एनीवे रील एनालिसिस क्लास हम एक साथ में पढ़ रहा हूं, देयरफॉर नॉट ए प्रॉब्लम। ये थोड़ा सा हाँ जी, इधर हम करना पड़ेगा 15 क्लासेस, इधर हम करना पड़ेगा एप्लीकेशंस मिला के इधर 14 क्लासेस, 13 to 14 क्लासेस। एनालिटिकल ज्योमेट्री वी नीड टू टेक इट एज 18 क्लासेस, डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट बेटा। कुछ लोग है ना समझना में इजी हो रहा है, कुछ लोग थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, स्पेशली फ्रॉम वेयर, फ्रॉम स्पीयर के बाद। ओके ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से ना मुश्किल हो रहा है, उनको डायग्राम विजुअलाइज करना पड़ेगा, कौन सा जा रहा है क्या है। एक बार वो चीज समझ में आता है तो बस हो जाएगा। बस डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट ओनली। समटाइम्स आई एम एबल टू फिनिश द 16 क्लासेस, मैक्सिमम 18, इवन 20 भी ले रहा है, क्योंकि ना धीरे धीरे चलने में कौन के बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज्यादा हो रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा टफ लग रहा है बच्चे को, और कुछ नहीं। खुद से पढ़ ले तो इनकेस आई एम एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज द प्रॉब्लम। Okay, right, either. And calculus, it won't take more than 10 classes. And here linear algebra, it will take around 15 classes, including matrices part. Here, modern algebra, I have to increase even 80 to 24, depends upon our comfort. 18 to minimum तो 18 क्लास तो ले लेगा बेटा। 18 क्लास तक नथिंग बट क्लास के बाद ओके ना, आपको समझ में धीरे धीरे समझ में आ जाए, आप लेना चाहिए। एंड रियल यस वी हैव टू टेक अगेन 18 to 24 क्लासेस, ये भी है ऐसा, क्योंकि ना फर्स्ट सीक्वेंस है सीरीज, उसके बाद कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस क्या है, टेस्ट क्या है, ओके ना, धीरे धीरे उसके बाद रीमन इंटीग्रल, वो चीज समझना पड़ेगा, इंप्रॉपर इंटीग्रल्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स वगैरह लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ओके ना, ये समझना पड़ेगा। एंड डायनेमिक स्टैटिक्स यस कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। What is the virtual work? What is that, equilibrium? What is the stable equilibrium? What is the unstable equilibrium? What are the situations it will come to the stable? These are the questions for the statics part. What is the potential energy? What is the kinetic energy? What is the energy principle? Okay, na? And what is the constraint motion? What is the rectilinear motion? What is the simple harmonic motion? धीरे धीरे what is the projectiles? धीरे धीरे इसमें डायनेमिक्स में
हम करना पड़ेगा. एंड मैकेनिक्स में व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज दैट इन लैग्रेंजियस मैकेनिक्स, लैग्रेंजियन मैकेनिक्स. Okay, what is the Hamilton equations? Same Hamilton in the linear algebra, the same scientist name only. Cayley-Hamilton theorem. Either is also Hamilton equations. And after that, fluid parts. Fluid parts also. What is inviscid flow? What is the vortex motion? Navier-Stokes theorems. Verity. Motion in 2 dimension, motion in 3D, sources and sinks. ये डिस्कस करना पड़ेगा थोड़ा सा. ये भी आपको ले लेगा बेटा 18 to 22 क्लासेस. ये भी ले लेता है बेटा 18 to 24 क्लासेस. तो समझने में भी धीरे 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 करना पड़ता है. ओके ना. बस टाइम टेकिंग एंड टफ ये चैप्टर्स. टोटल हाउ मनी इन केस मिनिमम साइड 18 to 18 18 4 जार कितना 72 क्लासेस. देन हार्ड वाला हो गया 72 क्लासेस मीन्स हाउ मनी मंथ्स बेटा. सपोज वीकली 5 डेज है क्लास मान के चलो. सपोज मंडे टू फ्राइडे. सपोज हाउ मनी मंथ्स इट विल टेक 3 months, right? 3 months, right? After that year minimum I told you these are how many days beta. See, this is the 15 classes, this is the 13, this is the 18, this is the 10 classes beta, this is the 15. Total how many? 30 plus counts 10 40 plus 10 50 plus 10 60 plus 11 71 classes. 71 classes. Suppose make it as 72. And after that only 1 month here. If we are the very slow, सपोज वीकली हम 6 क्लासेस ले रहे हैं, ये खत्म हो जाएगा 2.5 months में, 2.5 months में, 1 month में. बस वेरी स्लो बोल रहा हूं, बट ऐसा नहीं है. मैंने मैक्सिमम ऑलरेडी डाल दिया, इतना जरूरत नहीं है. ओके ना. बीच बीच में मेरा हॉलीडेज वो भी मैंने काउंट कर दिया ये क्लासेस में. मुझे को बताए कहां से मैं रेस्ट लेना है, मुझे को बताए. उसी टाइम पे क्लास आए बट मैंने काउंट कर दिया. आई नो दैट एज ए टीचर आई एम एग्जीक्यूटिंग ऑल दिस 13 टॉपिक्स. इतना टॉपिक से रेस्ट लेना, उनको मैं रेस्ट लेना, बच्चों को थोड़ा सा वर्क देना पड़ेगा. नथिंग बट टेस्ट प्रिपरेशन आपके लिए. मेरा टीचिंग रेस्ट है, दैट्स इट. ओके ना. धीरे धीरे समझ गए ना. ये करना पड़ेगा बेटा इन ऑर्डर टू स्कोर. हम टुडे वी आर विलिंग टू डू दैट वर्क. डेफिनेटली आने वाला टाइम पे हमारा आराम से क्रॉस हो जाएगा बेटा 400 प्लस. नथिंग बट 2020, नथिंग बट यू आर गोइंग टू राइट मेंस कब 2021 को मेंस लिख रहा है आप. 2020 केवल प्रीलिम्स है, समझ गए ना बेटा. आप 2020 को केवल प्रीलिम्स ओनली आप लिख रहा है. बस 2021 को मेंस. इंटरव्यू रिजल्ट उसी टाइम पे आ जाएगा 22 पे. आप आराम से 22, दैट्स इट. टेंशन खत्म. इतना करना पड़ेगा. इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी क्या है? देर आर द 2-3 वेराइटी ऑफ स्ट्रैटेजीज. पहले ऑप्शनल खत्म करना और पहले जीएस खत्म करना. जीएस है ना पहले कभी भी खत्म नहीं होता बेटा. पहला ऑप्शनल है ना, कोई भी चीज है ना ऑप्शनल पैकअप करना पड़ता है. पहला ऑप्शनल, उसके बाद धीरे धीरे पैरेलली जीएस. और जीएस कुछ लोग क्या कर लेते हैं, पूरा जीएस करने की कोशिश कर लेते हैं. वो खत्म नहीं होगा क्योंकि धीरे धीरे हर दिन में ऐड करना पड़ता है डाटा. ओके ना. राइट. पहले ऑप्शनल धीरे 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 वो खत्म कर दो. हमारा मैथ्स ऑप्शनल है ना वो फिक्स्ड है. टुमारो आने वाला टाइम पर मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया और नॉट डजंट मैटर फॉर आवर ऑप्शनल इज ऑप्शनल ओनली. बाकी चीज के लिए मैटर होता है बट हमारे लिए कोई मैटर नहीं है. फिक्स्ड ओनली, थिंग्स आर फिक्स्ड. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मे बी वट एवर द डेफिनेशन 2013 में मैंने दे दिया वही है डेफिनेशन. इवन 2032 में भी वही है डेफिनेशन देना पड़ेगा. देयर इज नो एडवांस्ड वर्जन ऑफ डेफिनेशंस. दैट इज डेफिनेशन. न्यूटन फॉर्मूलाज इट विल चेंज. नो, न्यूटन फर्स्ट फार्मूला वही है, सेकंड फार्मूला व्हाट इज दैट, थर्ड फार्मूला दैट्स इट. वो चेंज नहीं होता. इवन केपलर लॉस, आर्बिट्री मोशन, सेंट्रल ऑर्बिट्स, वो चेंज नहीं होगा. बस समझ गए. हमको जो चाहिए वो फिक्स्ड है, दैट्स इट. ओके ना. राइट. क्लियर ना. राइट.